फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो बाय द कार मॉल। और आज बहुत स्पेशल डे है, ब्राइट एंड सनी, बिकॉज हमारे साथ है एक ब्राइट एंड सनी कार। और बज चुके हैं सुबह के 6:55 और मेरी घड़ी में आपको देख के समझ में आ गया होगा, कार भी मैंने दिखाई दी आपको। सो इट इज़ अ ब्रिटिश ब्रांड, a British heritage, icon and a cult brand. It has a lot of fan following and a lot of people who are madly in love with this brand. It is the Mini Convertible Cooper S, the all new Mini Convertible जो अभी हाल में ही लॉन्च हुई है। तो इस कार में क्या नया है और इसकी क्या खास बात है वो हम आपको बताएंगे, तो बने रहना व्लॉग में और एंड तक देखना है इस व्लॉग को, क्योंकि इस कार में लगी हुई है जॉन कूपर वर्क्स JCW किट। तो कार की पावर, टॉर्क सब कुछ बढ़ जाता है जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन से। सो देयर इज अ सेपरेट रिमोट कंट्रोल फॉर दैट। तो वो कैसे होता है और हम उसको कैसे करेंगे सब कुछ आपको दिखाएंगे। कार का ग्रॉल और जो स्पोर्टी नॉइज़ है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। सो इट्स लाइक म्यूजिक टू द ईयर्स। सो टुडे इज़ गोना बी अ फन शूट एंड अ फन डे। तो इस ब्लॉग को पूरा देखना है एंड तक। और अभी के अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी कर दो, सो दैट हर संडे हम लेके आते रहें आपके लिए कोई एक्साइटिंग कार्स और आपको नोटिफिकेशन आते रहें। सो स्टे ट्यून ऑन द व्लॉग, विल टेल यू मोर अबाउट दिस कार कि इस कार में क्या नया है, क्या फीचर्स हैं और क्या कुछ आप कर सकते हैं इस कार के साथ। इट्स नॉट जस्ट अ कार, इट्स अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर। तो हम कार के एक्सटीरियर से शुरू करते हैं, बट एक्सटीरियर में जाने से पहले ये है कार की चाबी। दिस इज़ फॉर द लॉक, दिस इज़ फॉर द अनलॉक एंड दिस इज़ फॉर द बूट। तो कार के फ्रंट की हम बात करते हैं। फ्रंट में आप देखोगे पहले से क्रोम काफ़ी कम कर दिया। दिस इज़ ऑल पियानो ब्लैक फिनिश एंड इट लुक्स वेरी नाइस एंड स्पोर्टी। ये आपका एयर इनटेक के लिए यहाँ पे एक ग्रिल दी हुई है। नीचे यहाँ पे भी आप देखेंगे एयर इनटेक के लिए बम्पर में पार्ट्स दिए हुए हैं। द बम्पर लुक्स वेरी स्पोर्टी बिकॉज नीचे भी पूरा पियानो ब्लैक फिनिश दिया हुआ है। द फ्रंट इज़ मोर वाइडर, ऑक्टागनल शेप एंड इट लुक्स वेरी नाइस। द फेस हैज़ चेंज, यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम का फिनिश दिया हुआ है। द S स्टैंड्स फॉर कूपर S। अब हम बात करेंगे हुड की। लेट्स ट्राई टू ओपन द हुड। So that's the engine bay of the car, and this Mini is twin power turbo. It's a 2-liter 4-cylinder turbocharged petrol engine। और यहाँ पे ट्यूनिंग किट का नंबर लिखा हुआ है जॉन कूपर वर्क्स। दिस कार कम्स विद अ JCW किट। ये मेरे हाथ में उसका रिमोट है। सो ये क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। रेसिंग इज़ इन आवर ब्लड इट सेज। इफ़ रेसिंग इज़ इन योर ब्लड एज वेल, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। सो दैट इज़ द होल इंजन, वेरी वेल पैक्ड। यहाँ पे बहुत अच्छा इंसुलेशन दिया हुआ है। दैट्स द विन नंबर, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर योर कार। दैट्स फॉर योर विंडशील्ड वॉशर। और ये करते हैं हम इसको बंद। यहाँ पे आप देखेंगे इट्स वेरी इजी टू यूज़। नए हेडलैम्प्स दिए हुए हैं पूरे। यहाँ पे देखने वाली खास बात क्या है कि देयर आर नो फॉग लैम्प्स। वो आपको दिख नहीं रहे हैं बट फॉग लैम्प्स आर देयर। फॉग लैम्प्स आर इंटीग्रेटेड इनसाइड द हेडलैम्प्स ओनली। सो इट इज़ a LED headlamp with daytime running lights and integrated fog lamps as well। और यहाँ पे एयर इनटेक के लिए आप देखोगे बम्पर में for aerodynamics on the left and on the right। और यहाँ पे भी एयर कर्टेन नहीं दिया हुआ है बिकॉज ये एयर कर्टेन नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर एस्थेटिक्स एंड लुक्स। It adds to the sportiness of the car. Now let us show you the side profile of the car. So that is the side profile of the Mini Convertible Cooper S. Doesn't it look wow? It's amazing. There's a badging of S over here. Again, it's because of Cooper S, and there's a chrome with some black finish. The ORVMs are in contrast. This is a zesty yellow color. It's a new color. You have total 10 colors to choose from, 10 vibrant colors, and the mirror caps are black. आप इसमें जो है यूनियन जैक का फ्लैग भी लगवा सकते हैं। यू कैन हैव बोनेट स्ट्राइप्स। ऑल ऑफ दिस कम्स एज लोडिंग। सो द कार हैज़ अ स्टैंडर्ड प्राइस विच इज़ 46.5 lakhs ex showroom, and there are a lot of loadings in the car which you can have. The door handle comes in chrome. That's the fuel lid. That is again some chrome. अगर आप साइड में देखोगे तो पूरा आर्च और क्लैडिंग दिया हुआ है यहाँ पे प्लास्टिक का। सो इट्स अ black plastic. The alloy wheels are very nice and very sporty. This is a 17-inch alloy wheel and a tire size of 205
R45, R17. There are 3 types of alloy wheels to choose from. You can opt between a light alloy wheel roller spoke or a tentacle spoke, or a light alloy wheel rail spoke two-tone. So there are 3 different choices of alloy wheel that you can choose from. अब आते हैं कार के पीछे आप देखोगे यहाँ पे भी क्रोम का मिनी ने काफ़ी इस्तेमाल किया हुआ है। ये आपका टेल लैंप्स दिए हुए हैं दोनों साइड विद द यूनियन जैक फ्लैग डिज़ाइन। ये सेम यूनियन जैक फ्लैग आप ऊपर रूफ में भी ले सकते हो। इट लुक्स वेरी नाइस एंड स्पोर्टी, देन अगेन यू हैव टू पे फॉर इट बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लोडिंग। यहाँ पे आप देखेंगे मिनी की बैजिंग है एंड पियानो ब्लैक फिनिश है, कूपर एस एंड जॉन कूपर वर्क्स, बिकॉज दिस कम्स विद अ JCW किट एंड दैट्स ऑल्सो अगेन अ पार्ट ऑफ लोडिंग। JCW किट लगती कैसे है? JCW किट लोडिंग का पार्ट है, बट वो मिनी इंडिया से नहीं लगेगा। वो आप अपने डीलर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो रीट्यूनिंग से आपको JCW की बैजिंग मिलेगी और साथ में मिलेगा ये रिमोट कंट्रोल। बट इस रिमोट कंट्रोल से होता क्या है, एज सुन एज यू प्रेस दिस ट्वाइस, कार का जो साउंड है वो बहुत स्पोर्टी हो जाएगा एंड कार का पावर और टॉर्क दोनों ही बढ़ जाएगा। नॉर्मली अगर आप नॉर्मल कार लेते हैं, स्टॉक कार, सो इट कम्स विद 192 bhp ऑफ पावर, बट इफ़ यू टेक दिस लोडिंग एंड प्रेस दिस बटन, द पावर इंक्रीजेज टू 212 bhp। और जो टॉर्क है गाड़ी का, जो कि नॉर्मली 280 न्यूटन मीटर्स का है, वो 300 न्यूटन मीटर हो जाएगा। एंड इवन जो 0 to 100 है कार का 7.1 सेकेंड्स, वो भी लगभग 6.7 to 6.9 seconds के बीच में हो जाएगा। So the car becomes more quicker, more faster and more sporty. So this car comes with a reverse camera. That's the reverse camera for you. और नीचे अगर आप बात करोगे तो बम्पर के नीचे भी यहाँ पे एग्जॉस्ट दिए हुए हैं। So that's, इसके ऊपर कवर दिया हुआ है that says John Cooper Works. I was checking it because we've just come back from a drive, so it's little warm. So that is a twin tail exhaust pipe, and these are the parking sensors 1, 2, 3 and 4. So the car comes with a reverse parking sensor and a reverse camera as well. So now let me open the boot for you. So it's a minimalist boot, कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है। आप कुछ अपने शॉपिंग बैग्स और कुछ डफल बैग रख सकते हो। And there is no spare wheel in the car because there is no space, but it comes with a run flat tire. So run flat tire से होता क्या है वो भी अभी आपको बताऊंगा, और उससे पहले आप यहाँ पे ध्यान दें। So this is a lid which comes out and it says max 80 kgs. So आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। बाहर का नज़ारा अच्छा है, उधर का आपको दिखाता हूँ। So you can go for a picnic and if the weather is good, you can sit over here comfortably and have a cup of coffee and enjoy. And it says 80 kg. I'm just a little over 80 kgs and I'm sitting over here comfortably, and this can take my weight as well. So by now you know my body weight as well. And now let's go on the side. So these are the tires. Tires are run flat tires, RFTs as we call it. तो रन फ्लैट टायर में क्या होता है कि इट्स मोर स्ट्रॉन्गर देन ट्यूबलेस टायर, और अगर चलती कार में आपकी टायर पंचर हो जाए, सो यू जस्ट गेट अ नोटिफिकेशन, आगे लिख के आएगा योर टायर इज़ फ्लैट, एंड आप नियरेस्ट पंचर शॉप में वाइल ड्राइविंग उसको जाके रिपेयर करा सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल आपकी साइड वॉल कट जाए तो ही वो टायर फ्लैट होगा। अगर नॉर्मल पंचर होता है तो टायर फ्लैट नहीं होगा। यू कैन ड्राइव इट एट स्लो स्पीड ऑफ अबाउट 40 to 60 kilometers up to a distance of 120 to 180 kilometers depending on the road surface and depending on the terrain. ये था कार का एक्सटीरियर। अब चलते हैं कार की ड्राइव पे। तो इससे पहले हम चले कार की ड्राइव पे, आपको कार का रूफ खोल के दिखाते हैं और रूफ क्लोज करके दिखाएंगे कितने सेकंड्स में वो होता है। इट टेक्स 18 seconds टू ओपन एंड क्लोज द रूफ, और आपको ये JCW किट का रिमोट भी यूज़ करके दिखाएंगे कि साउंड कैसे एनहांस होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, और कैसे पावर बढ़ती है। एंड we'll tell you more, we'll tell you about the features, we'll take you inside the car, the front seat and the back seat. Stay tuned and keep watching. So we are inside the car. Before we take you for a drive, let's open the roof and see how much time does it take. 1, 2, 3.
seconds to open the roof, and to close it again it takes 18 seconds. That's the start stop button, engine start stop, और ये कर दी है कार मैंने स्टार्ट। आपको सुनाते हैं इंजन की आवाज़। ये रिमोट लिया मैंने अपने हाथ में। आई प्रेस इट ट्वाइस and the sound will change. So that is the kind of difference. जो sound है उसमें bass add हो जाता है, heaviness add हो जाती है. It sounds more like a roar. The tiger roars and it comes to life. So there is a place to keep this. We'll just plant the bomb over here so that we don't lose it. And now it's time to take you for a drive. Let's close this roof. So finally we are inside the Mini Convertible Cooper S, the one which we are driving today. तो आज आने वाला है बहुत सारा मज़ा, क्योंकि एक बहुत ही पेपी कार है and it's very small in size as you have already seen. और इससे पहले हम आपके लिए 2 व्लॉग्स लेके आ चुके हैं मिनी के, एक कंट्रीमैन का और एक 3 डोर हैच का। तो अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो इस समय ऊपर स्क्रीन पे आप देखेंगे 1 बाय 1, पहले कंट्रीमैन का और फिर 3 डोर कूपर एस का लिंक आ रहा है, आप उनको क्लिक करके वो व्लॉग्स देख सकते हैं। सो इट्स टाइम टू गेट बैक टू दिस वेरिएंट व्हिच वी आर ड्राइविंग टुडे, द मिनी कन्वर्टेबल कूपर एस। सो दिस कार इज अ पेट्रोल 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन, 1998 सीसी का इंजन है इस कार में, एंड इट जनरेट्स पावर ऑफ 192 bhp एंड अ टॉर्क ऑफ 280 न्यूटन मीटर, माय डियर फ्रेंड्स। एंड जो 0 to 100 एक्लेम्ड है इस कार का, वो है सिर्फ 7.1 सेकेंड्स। सो अभी 0 to 100 पे भी चलेंगे एंड वी विल ट्राई टू चेक द टॉप स्पीड ऑल्सो फॉर यू। तो बहुत मज़ा आने वाला है। एंड दिस कार हैज़ सम ग्रॉल, एज सुन एज यू प्रेस द एक्सीलरेटर डाउन इट स्टार्ट्स टू रोर। एक्साइटिंग बात क्या है आज इस कार की कि इसमें JCW किट लगी हुई है जो कि स्टैंडर्ड नहीं आती। सो हमारे पास उस JCW किट का ये रिमोट कंट्रोल है, ये बॉम्ब डिफ्यूज़र की तरह लग रहा है मुझे देखने में। बट बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट है, जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो कार की साउंड जो रोर है वो और लाउड हो जाएगा। इट विल बी मोर स्पोर्टी एंड इवन द पावर, द BHP एंड टॉर्क इट इंक्रीजेस। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप बने रहना इस व्लॉग पे और इस वीडियो को एंड तक देखना। सो let's take it for a drive around the city and also we'll try to take you on the highway। और हम सुबह से चला रहे हैं इस कार को, it is very nice to drive। अगर आप लो रेंज की बात करो तो it is super, और अभी अपन मिड रेंज में है, so mid range is very nice, even better, great, and the top range it is superb and बहुत ही exciting and बहुत ही अच्छा adrenaline boost आ रहा है कार को चलाने में। and even the it's cutting radius and the no body roll at all, zero zilch, and it is just aims like a dart and you pull the bow and the arrow shoots, so it goes straight to the target, and even the braking is perfectly bang on. So full marks to Mini for this, and the car drives like anything. You are totally in control of the car. It is so much fun to drive. Feels like I'm driving a go-kart. Put it on halt, and the 3 modes in the car. One is sports, mid, and the green. We'll put it on the sports mode, and we'll just try to take you around and see how it picks up. So that's how we start. Oh my, 0 to 60, 6,000 RPM, and we've crossed 100 already. It's not a 0 to 100 test, but एक speed breaker आ गया. Even the suspension is very nice, the quality. And अंदर हालांकि इसमें RFTs आते हैं, run flat tires, because there is no spare wheel in the car. So RFT में थोड़ा सा आपको अंदर कई बार jerk
feel hota hai, but somehow the suspension settings are so well tuned that the car ride and drive quality is very nice. The steering is very chunky and very nice to hold on to. It has a very nice grip and a feel to it. The car engine is mated to a 7-speed Steptronic automatic transmission, and the gear shifting is very quick and very smooth. आपको अगर और faster shifting चाहिए, you can always opt for pedal shifts. So इस कार में खास क्या है कि इस कार का एक basic price है which is 46.5 lakhs एक्स शोरूम. जब ये लॉन्च हुई थी तो शायद 44 कुछ लैक्स पे लॉन्च हुई थी. ऑफ लेट सारे कार्स के प्राइसिंग इंक्रीज हो चुकी है. सो इसका प्राइस भी 46.5 lakhs एक्स शोरूम है. एंड दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट कन्वर्टेबल्स टू ओन. 46.5 lakhs में आपको कोई भी कन्वर्टेबल नहीं मिलेगी. दिस इज फुली कन्वर्टेबल, वो भी आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे एंड विल टेक यू ऑन अ ड्राइव in that convertible mode also. So the car is not just a car, like I said, it's a lifestyle, it's a way of life, and it has a different cult and different people who love this car, and you love this car and the car loves you back. It is an amazing machine to own. As we're driving in the city, you can see there's a curve ahead. We'll try to take that curve at a speed of 70 or 80 and let's see if the car stays in our control or not. Let's just try it out. I love the way this car picks up. I've crossed 80 already, and this curve, it's seamless. I'm taking it at 110 km/h speed, but this is seamless. There's no drift, there is no body roll, there is no distraction at all. The car is just bang on, spot on, and it is fun to drive. It's just zip zap zoom. Let's try to rev it even higher. I love the sound. Let's change the mode. Oh my. I just touched 130 in no time. So that was a speed breaker, and as I said, it is very comfortable on speed breakers as well. The gear shifting is pretty quick. I'm just loving it. It's so peppy, so sporty, full of energy, and it gives you a great adrenaline boost and goosebumps at time. So the drive is just wow. I'm loving it. Let's try to take the 0 to 100 test and the top speed and see how the engine under the hood performs. So it's time to check the 0 to 100 of this car. Let's put the car on the sports mode. That is the sports mode. Let's put the traction off. Yes, now the traction is off, and let me switch on the JCW kit. Yes, so now one foot on the brake and the other one on the accelerators. Let's check out the 0 to 100 of this car. They say it does 0 to 100 in just 7.1 seconds. 3, 2, 1, go. That's some wheel spin in the car. We've crossed 60. Oh wow, 80, 90, 100, and this is amazing. I love the sound. This is just so sporty. We crossed 130 and this was fun. Would like to do it again. I love it, and I'll just do it once again for all of you, and let's see how it goes. जो crackling sound है जो पीछे exhaust से आ रही है वो बहुत ही amazing है. It's a twin pipe exhaust, आपने already देखा होगा. So it is just wow. I don't have words to explain. I'm just, you just feel in so much in awe of this car कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी सीधे जाके खरीद लेता. So yes, it is not a practical car. It is an impractical car. But who needs a practical car? This is a lifestyle product. It's a luxury, and luxury is never practical. So this is a style statement, a style quotient, a convertible, a 4-seater, 2-door. I would largely say that the car is mostly 2-seater because 2 adults can accommodate in the front seat, and rear seats are only for child. तो अभी आपको सीटिंग भी दिखाएंगे और कंफर्ट के बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले थोड़ी सी ड्राइव और कर लेते हैं. So again, now we are on a empty stretch. It's drive mode, sports, traction off. 3, 2, 1, go. 6,000 RPM and cross 100. Let's
the drive and the feel of the car. This is just super duper hit. Just love the drive, and if you love speed, if you love adrenaline boost, if you love thrill, this car is for you, my dear friends. And this is a style statement. We'll open the roof and we'll take you for some drive. एंड जो रूफ है वो आपको कार खोलने के लिए कार को होल्ड करना पड़ेगा, बट अगर आप चलती कार में रूफ को खोलना चाहते हैं, सो यू हैव टू बी बिलो अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर. सो वी ड्राइविंग एट अ स्लो स्पीड ऑफ अबाउट 20. सो लेट्स ट्राई टू ओपन द सनरूफ. बट वो सनरूफ ओपन करने से पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा. जो हमारी कार है, लोगों को लगता है कि एवरेज बहुत कम देती है. ये 9.6 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज ऑलरेडी दे रही है, 9.6. एंड द एक्लेम्ड माइलेज इज एज पर स्पेक शीट 16.35 किलोमीटर पर लीटर. सो 9.6 ये तब दे रही है जब आपने देखा हमने कैसे इसको 0 to 100 2-3 बार टेस्ट करा. 2 बार आपके लिए कैमरा में करा, 2 बार बिना कैमरे के भी करा. सो we drove 130, 140. So the way we are driving the car, still it is giving an average of 9.6 km per liter, which I would say is very nice and very decent for this kind of power and this kind of drive which we are doing right now. Now we are driving again at the speed of 15-20. Let's try to open the sunroof for you. Let's see if it opens or not. So that's step 1. And then again you have to press it, pull it towards you. That's step 2, and the sunroof opens. So finally ये glasses भी ऊपर हो जाएंगे दोनों, ताकि अंदर wind नहीं आए. And it's made in such a way, it's a proper aerodynamic shape कि आपका जो आगे से हवा का pressure आएगा, तो वो अंदर नहीं आए. अंदर अगर कोई सामान भी रखा हुआ है अपने कार में तो वो नहीं उड़ेगा, because it's designed in such a way. So now this has made a envelope around the car. जितनी भी विंड है वो विंडशील्ड से डिफ्लेक्ट होके ऊपर चली जाएगी एंड साइड से बाहर हो जाएगी. सो वी कैन ड्राइव ऑन हाई स्पीड्स ऑल्सो comfortably. As you can see, I'm driving at a speed of 60-70 now, and it is very comfortable to drive. It's a very nice drive. It's a nice weather right now. We're driving at morning, so it's a good weather, nice sunny weather. तो अच्छे वेदर में इससे अच्छी कार कोई नहीं हो सकती. Just imagine taking this car to mountains and driving it and good weather with less sunshine, and it is just so dreamy and so out of the world. And if you have not tried this car, visit your nearest dealer, Bird Automotive, and take a test drive of this Mini Convertible Cooper S. It is just wow. Now let's try to close the roof as well while driving the car. So let me bring it below the speed of 30. It's closing. Let me try to increase the speed. Let's see it closes or not. So I've crossed 40 and it's not closing. You can see it's stuck. Can you see? Just till the camera. Okay, can you just? I just brought the speed below and it's closing again. So for safety reasons, on high speeds you can't close this roof, क्योंकि हवा का बहुत ज़्यादा pressure होता है, and you know there's some machinery that's functioning, so it can get damaged. So there's a certain kind of pressure that this machine can take, and also it's not safe on high speeds if you're operating it. So for your safety and for cars, machines safety, it is important that you have to be on halt while operating this roof, or at a very lower speed, about 20-25, when you are in totally control of the car. Let me take you on an inside tour of this Mini Convertible Cooper S. So that is the door trim, the lock and lock button, that's for the power windows, that's the to roll down both the power windows together. It's a one-touch roll down, but it's not a one-touch roll up, surprisingly. Yeah, so that's for both the power windows, that's for the individual power windows. This is for the side mirrors, you can adjust it, and these are to fold and unfold your side mirrors. These are to adjust your ORVMs. So that's the door trim control, that's the speaker. You can take a Harman kardon as well
but that again comes as a loading. So the car has a lot of loadings like Urban Garden, the head-up display, the Union Jack flag on the roof, leather seats if you want, like the seats which we are sitting in, that is partial fabric and partial leather. We will show the seats. The steering comes with some chrome and a mini logo in the center, और ये सारा नया है अपने predecessor से, नए buttons और नए controls दिए हुए हैं. So this is for the voice command, this is to pick and cut the call, this is to access the menu. So we can access the menu from here and change the options. और यहाँ पे ये BC लिखा हुआ है, BC is for board control. You can change the settings. There's a toggle switches, you can choose the FM channels and choose the options from here. This is for the volume and this is to select the option. This is a voice command, that's to pick and cut the call. This is for your wipers and the left one is for your indicators. The steering is also tilt and telescopic. You can adjust the rack and the reach of the steering. यहाँ पे ये board control दिया हुआ है, यहाँ से आप settings देख सकते हो. Like the car has driven 7,200 kilometers and it's showing the 9.6 kilometer per liter का हमने average निकाला है अभी तक, और कितना fuel range है. All the settings of the board control you can see from here. This is an analog meter. This is for the fuel on the right hand side, and left is the RPM, and this is a very nice and sporty old school kind of analog meter. अगर आपको digital meter लेना है, then that's again a part of loading. You can have a 5-inch digital instrument cluster over here instead as a loading if you want. And this is the infotainment screen, and there are a lot of colors to choose from. This looks very bright and funky. It's a 8.8 inches infotainment screen, and it's again touch, so I can choose the options what I want to: vehicle settings, systems, media. It says 1, so that means 1 notification. If you go to notification, it says engine oil. So the service is due in February 2023 in 2000 kilometers. So कार आपको बता देगी कि आपकी कार की सर्विस कब ड्यू है. कार के कंट्रोल्स आप चेक कर सकते हो, like other Mini and BMW family cars. If the vehicle is okay, brake fluid, brake pads, all the options can be seen and checked from here. So this is a very informative screen with all the media and the car controls in it. These are 6 channels for FM you can store. That's band, mode, volume, mute and unmute your music system. These are the AC controls, the toggle switches, which I really love about Mini. So there are 3 different modes. So one is a sports, and the other one is a mid, and the third one is a green. So on the green mode, you will have the minimalistic drive with the best fuel efficiency, and this is to auto start stop, जो आपका फंक्शन है उसको स्विच ऑफ स्विच ऑन करने के लिए, कि रेड लाइट्स में या जब आप हॉल्ट करेंगे कार अपने आप बंद हो जाएगी, और जब आप एक्सीलरेट करेंगे कार अपने आप स्टार्ट हो जाएगी. दैट्स द AC control, the vent, the defoggers, and that's your 12-volt charger, the USB socket, and there's some storage out here. That's a cup holder. That's the 7-speed Steptronic automatic transmission. So यहाँ पे आप एक बटन देख सकते हैं. That's to unlock. Just press it and change the transmission. And you can also, that's for park, you press it, the car comes to park. You can also use the Triptronic, you can shift it to left and the car comes to manual mode. That's the Mini iDrive setting, the control panel, the control module, the jog dial. यहाँ से आप control कर सकते हो उसको पूरा. You can rotate it like this. You can also select and deselect it by pushing left and right. So, and just select the option by pushing it inside. So that's to go back. That is for different options. As soon as I press the options, there are different options that I can choose from. Delete all notifications, split screen, help, whatever I want to. That's the glove box for you. Decent amount of storage. It's not a cool box. And the dashboard is very nice, elegant and sporty. There's black on the top, then there is again piano black finish, and here is some beige, light beige color, and they are very cool turbine looking AC vents. You can switch off the flow of the air con or increase or decrease it. So very handy and very sporty and very comfortable to use. See over here, that's the visor with a mirror but without light. That's another visor with another mirror without light. Those are again the toggle switches, the lamps, and this is for opening and closing the roof. So the car comes with a center armrest as well.
यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, आप इसको भी उठा सकते हैं if you don't want it. And let's talk about the seats. The seats are all manual like the other minis. इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, slide कर सकते हैं. The electric package can be taken as a loading if you want. So that's the plush cabin of the Mini Convertible, and those are the standard seats, partial fabric and partial leather, and it's looking very nice, very elegant and very sporty. This is for the thigh support. इसको आप यहाँ से आगे कर सकते हो. And seat के लिए यहाँ पे आगे एक lever दिया हुआ है, this one. If you pull this, then you can slide the seats back and forth. This one is to bring the back and the front. You can tilt it, and this is to adjust the height of the seat. So there are 4 levers which are given on the seat to adjust to your body type settings. Now it's time to get on the back seat. आगे front seat were very comfortable, body hugging seats and very nice. So let's try to show it to you how the back seat comfort is. Though I know it's child seat and it's difficult to get in, but it's a test and it's time to take that test. Although I know it's not going to be comfortable, if we are able to pull और आगे हम back seat पे, it's very upright and पूरा मैं ऐसे सीधे होके बैठा हुआ हूँ, so not at all comfortable. It's a bucket seat with armrest as well, and there's a cup holder out here. There are 2 speakers और पीछे यहाँ पे seat belt भी दी हुई है, and it comes with ISOFIX child seats. It's time to pull it back. So that is the kind of space. Actually there is no space, इसको मैंने थोड़ा आगे किया हुआ है. So I am sitting here, you know, very congested, very tight. It's just a child seat and suitable only for children. So let's try to get out of this back seat. It is not so easy to get in and get out from the back seat, but overall it's not about the back seat. This car is about driving. This car is about fun. This car is about lifestyle. This car is about how it converts itself. So it's a fashionable car, a style statement, a style quotient. So hi friends, आपको हमारा आज का ये vlog और ये डिटेल मिनी कन्वर्टेबल कूपर एस के बारे में पसंद आई होगी. सो बने रहिएगा हमारे चैनल पे. आगे के लिए हर हफ्ते हम लेके आते रहेंगे आपके लिए कोई ना कोई एक्साइटिंग कार. संडे को मैं लेके आऊँगा आपके लिए कोई नई कार का रिव्यू, और थर्सडे को हमारी शोरूम की कार मॉल की सेल्स टीम लेके आएगी आपके लिए कोई भी प्रीमियम या इंडियन यूज्ड कार. सो कीप वॉचिंग द चैनल एंड कीप शोइंग अस द लव. नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा और कैसी कार्स आप चाहेंगे कि हम आपके लिए और लेके आएँ. तो बने रहिएगा चैनल पे एंड अगले हफ्ते मिलते हैं. तो तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग.